Now, air quality in northwestern India and Mumbai will be very poor today and tomorrow thanks to a lot of storm and dust from the Gulf region. The situation was especially bad in Jaisalmer last evening, with heavy winds worsening the situation. The city and surrounding areas were virtually under siege, with the dust bringing all activities to a halt. The nearby sand dunes meant there was enough dust to feed the storm. Similar scenes witnessed in Jodhpur as well. A dry spell and the resulting storm forced people to stay indoors. According to meteorologists, the phenomenon is remnant of a dust storm which originated in the Gulf region past week. Other parts of the country, including Delhi and Mumbai, will also be affected in the next 2 days. जो ये है ना, there is no storm, wind storm. Only एक चीज़ है कि जो वहाँ से आ रहा है, it's a wind driven dust, जो दिल्ली में आ रहा है. और जो हम देख रहे हैं दो तीन दिन से, पहले तो मॉडरेट था, अब कल से यहाँ पर पोर क्वालिटी में चला गया है. और ये हम फोरकास्ट किए हैं कि दो दिन और रहेगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे तक डस्ट. वेस्टर्न साइड में हो सकता है ये बम्बई में ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा. उसके बाद दिल्ली भी आ सकता है, और जो बीच का शहर है कानपुर या पंजाब वगैरह, उसमें भी आ सकता है.